Hello. So, in 1985, we have been able to come to know about one more problem in the world. That is, I said that ozone hole, and I said that ozone depletion. Ozone depletion or ozone hole. Ozone hole or ozone depletion. And and in the 1987, Montreal Protocol took place. It is 1987 and Montreal Protocol took place, and it is happening after I said that every 3 years. It is happening after every 3 years. Correct? And we are working on, I said that ozone depleting substances. Ozone depleting substances. And these are fourth group related. If you'll see that it is carbon dioxide, carbon monoxide, methane. क्लियर? क्योंकि जनरली आप क्या जानते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसके अलावा जानते नहीं है. लेकिन आई सेड दैट देयर आर सेवरल, आई सेड ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस. Which one I said that? Carbon dioxide, carbon monoxide, and which one I said that? Methane. Is it okay? Then there is a nitrous oxide and nitrogen oxide. Nitrous oxide, and then I said that what? Thereafter there is a fully halogenated alkanes and partially halogenated alkanes. और इसमें halogenated में क्लोरीन वाला भी होगा और किसका होगा? ब्रोमीन वाला भी. both. Fully halogenated alkanes, and I said that what? Partially halogenated alkanes. तो आप लोग जो सुनते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, these are, I said, these are. Understood? So these are the ozone depleting substances, but at present we are working on, I said that in our freezing instruments, or I said that we are generally using which gases? Chlorofluorocarbons, which has been converted into hydrochlorofluorocarbon, but even then we have to phase out. We have to, what I said that? Phase out. We have taken that in this period, in this period, in this period, और ये पीरियड का मतलब ऐसा हम लोगों ने देखा कि 2008 to 2012, 2012 to 2020 in the climate change. लेकिन यहाँ पर in this period नहीं है. But slowly it has been said that हमें क्या करना है? We have to phase out. क्योंकि ये क्या है? They are not, protocol तो है, but there is not binding anyone in this one. Remember that it is not binding anyone. So slowly and slowly that every nation is decreasing. और 2010 के बाद that ozone depletion is on recovery. Ozone depletion is on
after 2010 the ozone depletion is, I said that, recovery. So इसका मतलब है कि it is decreasing. Ozone depletion size, ozone hole that is there, it is what? Decreasing. कब ये start हुआ? Which convention is tell you? Vienna Convention and ozone hole depletion के लिए. And Montreal Protocol has been established and it is taking place every 3 years. And these are the ozone depleting substances, ODS. And then 2010 से ozone depletion is on the path of recovery. You know that this is your north pole and here it is, I said that. Suppose the sun is in the, I said that, northern hemisphere, so this region will face winter. Or I said that the first level is troposphere and after that second level goes to what I said that, stratosphere. और इसी स्ट्रेटोस्फीयर में क्या है? ओजोन गैस. यस सर. सिमिलरली वी हैव, आई सेड दैट व्हाट, फर्स्ट लेवल क्या है? टेल मी. एटमॉस्फेयर का ट्रोपोस्फीयर. एंड ट्रोपोस्फीयर के ऊपर क्या है? स्ट्रेटोस्फीयर. और स्ट्रेटोस्फीयर में व्हाट इज देयर? ओजोनोस्फीयर. यस. And in this region atmospheric circulation यदि आपको पता हो तो in this region I said that moisture goes and also those gases goes over there. कौन कौन से gases पहुंच जाते हैं यहाँ पे? tell me. If you will see Hadley cell, Farrell cell and polar cell, 3 cells are there. तो यहाँ इन सब जगह का हवा finally यहाँ पर पहुंचता है. This is the reason of polar vortex. And then air, or I said that, converging in this region. So whatever the gases are released, it is meeting there. And whatever the gases are released, it is meeting there. Yes or not? And these, if I am talking about anywhere, this chlorofluorocarbon and hydrochlorofluorocarbon, they are not, I said that, dangerous on the earth, in the troposphere. It is like an inert gas. It is not affecting anyone. It is an inert gas. लेकिन यहाँ पे stratosphere में, in the stratosphere, there is one cloud is there, stratospheric cloud, and it is also known as, I said that, mother of pearls cloud. कौन सी क्लाउड है यहाँ पे? Which cloud is there? Stratospheric cloud. Which cloud? Stratospheric or mother of pearls cloud. Shall I remove? In the stratosphere, which cloud? Mother of pearls. Shall I? And then listen me. और इस जगह पे टेम्परेचर जनरली यहाँ पर सबसे ज़्यादा विंटर यहाँ पे होता है और स्ट्रेटोस्फीयर में यहाँ का टेम्परेचर -80 to -90 डिग्री सेल्सियस और इस रीजन में -70 to -80. So what is the temperature in this region? -80 to -90 above Antarctica, and above Arctic what is the temperature in the stratosphere? -70 to -80. तो ज़्यादा आइस क्रिस्टल क्लाउड कहाँ पे बनेगा? स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड. साउथ पोल. Where there will be? South pole. And this chlorofluorocarbon, they sit on what I said that? Ice crystal cloud. And what is the temperature? Tell me. और इसमें से क्लोरीन एटम dissociates. What happened? And that become nascent chlorine. Yes or not? That is very active chlorine. Or this chlorine reacts with what I said that?
ozone and it forms chlorine oxides and then oxygen detached. And again this chlorine oxides balance करने के चक्कर में मत बैठना. And this chlorine oxides अपने आप dissociate होके chlorine and what I said that oxygen gives. इसका मतलब again I got what? Nascent chlorine. And this chlorine will again I said that react with ozone and it will form chlorine oxides plus what? So it is again dissociating another ozone molecule. And then again this will what will happen? Chlorine oxides again dissociating into forming chlorine and oxygen. तो ये क्या चल रहा है? So one chlorine atom dissociates 1 lakh ozone molecule. इसका मतलब जहां ज्यादा आइस क्रिस्टल क्लाउड होगा that region में they will sit more properly and they will dissociate into and it will give what I said that ozone molecule to dissociate. Yes or not? तो ये मुझे बताइए कि नॉर्थ पोल पे सबसे ज्यादा होगा या साउथ पोल पे ज्यादा होगा? सो आपने क्या सुना है? आर्कटिक होल सुना है या अंटार्कटिका होल सुना है? So therefore we have I said that what? Shall I remove this? Everyone has written? Shall I? मुझे कुछ भी करके ओजोन मॉलिक्यूल को डिसोसिएट करना है and it is not only chlorine atom, any other I said that who is very highly nitrogen become nascent, he will be also able to do that. ये हटा दो ना. लेकिन ये मुझे बताइए कि ये फेनोमेना कब होगा? जब यहाँ विंटर होगा और जब यहाँ विंटर होगा. इसका मतलब है when the winter in both the hemisphere, it is not happening during the summer. इसका मतलब समर में there is no ozone hole. Getting my point? In which condition the ozone hole creates? Tell me. Winter. लेकिन पहले ozone hole का size ज़्यादा था. Now ozone hole size is decreasing. So 2010 onwards it is recovery. So और ये कब होगा? During winter period. और विंटर पीरियड के साथ ही वो क्या होता है? स्प्रिंग. इन दो पीरियड्स में देयर विल बी ओजोन जहां पे टेम्परेचर इज वेरी लो. अंडरस्टूड इट? सो व्हिच कन्वेंशन वी हैव बीन एबल टू सी? एस टेल मी. Vienna Convention. And which protocol? Montreal. And Montreal is in a city in what? Canada. It is clear. So we have finished with which one? Vienna Convention and Montreal Protocol. Clear? And another one, if I am talking about, I said that I said that this is your Caspian Sea. और नीचे कैस्पियन सी के नीचे कौन सा कंट्री है? टेल मी. ईरान. एंड ईरान पे देयर इज अ रामसार सिटी. विच सिटी? और 1971 को सेकेंड फैब में क्या हुआ था? यस टेल मी. यहाँ पर कन्वेंशन टुक प्लेस. यस और नॉट? व्हाट टुक प्लेस? Convention took place. And this convention, if I am talking about, I said, it is talking about what? What? Maintaining ecological character of wetland. Maintaining ecological character of, yes or not? Maintaining ecological character of, is it clear?
रामसा सिटी में 1971 सेकेंड फेब को हुआ, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? टेल मी। रामसा कन्वेंशन, यस और नॉट? Shall I remove? Which convention I am talking about? Ramsar convention. Can you remember? Yes. हटाऊं, बोला तो करो. So keep on writing down when I'll maintaining. So what is the role of it? Maintaining ecological character of the. और सबसे ज़्यादा इकोलॉजी और बायोडाइवर्सिटी कहाँ पे? एवरग्रीन फॉरेस्ट, कोरल रिफ्स and then wetland. So wetland is also very much important. Wetland is क्योंकि सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी कहाँ पे? एवरग्रीन फॉरेस्ट, कोरल रीफ्स एंड wetland. Understood? So the wetland is very much important. Understood? Wetland is very much important. तो हमें जहाँ पे भी होगा wetland, मुझे हम क्या करना होगा? Preserve and conserve. किधर? So next point लिखेंगे. It has highest biodiversity similar to. It has highest biodiversity similar to evergreen rainforest, evergreen rainforest and coral reefs. एंड कोरल रिफ्स में बोला जाए कि ओशियन की जितनी भी बायोडाइवर्सिटी है वो 0.1% एरिया में है. कोरल रिफ्स आर ओनली इन द 0.1% एरिया ऑफ द ओशियन वर्ल्ड, बट 25% ऑफ द बायोडाइवर्सिटी लिव्स इन. तो इसका मतलब सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी कहाँ पे है? कोरल्स में. कैन आई से दैट इट इज द रेन फॉरेस्ट ऑफ द ओशियन. सो द कोरल्स आर व्हाट? कोरल्स आर नोन एज व्हाट? रेन फॉरेस्ट ऑफ द ओशियन. इसी तरीके से हमारे वेटलैंड में भी क्या है? टेल में लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ व्हाट? बायोडाइवर्सिटी. आई सेड नेक्स्ट पॉइंट, आई सेड दैट लिखेंगे इट कैन बी नेचुरल and artificial. It can be natural and artificial. Which are I said that? Natural and what I said that? Yes, tell me. Artificial. Artificial means what? Man-made. Artificial means it can be natural and it can be artificial means man-made. चलिए, I said suppose ये रिवर जा रहा है. यस, इस रिवर के आसपास में थोड़ा बहुत हमेशा फ्लड और पानी, यहाँ पे सपोज बैंक टूट गया एंड देन वाटर इज कीप ऑन कमिंग एंड इन दिस रीजन में आई सेड दैट वाटर इज एक्यूमुलेटिंग. और ये थोड़ा सा क्या बना दिया? स्वाम्पी एंड मार्सी. और इन दिस स्वाम्पी एंड मार्सी देयर इज अ लार्ज नंबर ऑफ, आई सेड दैट व्हाट? बायोडाइवर्सिटी स्टार्ट कम्स. सो द स्वाम्पी एंड मार्सी रीजन इज इन अ व्हाट? वेटलैंड. सो व्हिच रीजन इज वेटलैंड? यस टेल मी. स्वाम्पी and